जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर प्रीति मित्तल एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। इन द लास्ट वीडियो हमने केमिकल डिवीजन ऑफ मैटर देखा था। हमने देखा था कि हम मैटर को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू प्योर एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बट टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। हम सिर्फ थियोरेटिकली ही नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करके देखेंगे सो एज टू मेक आवर लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग। So now let's start with our study of the types of mixtures. Mixtures are basically classified into two categories, that is homogeneous and heterogeneous. Homogeneous mixtures वो मिक्सचर होते हैं जिनका composition throughout होता है exactly एक जैसा, and they are also known as solution. So when I ask you about solution, means you are asked about the homogeneous mixtures. Homogeneous mixture में composition exactly एक जैसा होता है। इसका मतलब क्या है? For example, अगर हमने sugar, salt, lemon juice इन सबको पानी में डाला और मिक्स कर दिया, so that is an example of homogeneous solution. क्योंकि water के अंदर क्या क्या dissolve है? Either we can add salt or sugar or lemon juice, या फिर ये तीनों ऐड कर दे। तीनों भी एक साथ ऐड करें या अकेला इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट ऐड करें, दैट सॉल्यूशन विल बी नोन एज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। इसे होमोजीनियस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप इस वाटर को टेस्ट करेंगे, इस सॉल्यूशन को टेस्ट करेंगे, तो थ्रू आउट द सॉल्यूशन आपको इसका टेस्ट एक जैसा लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि टॉप पे शुगर के पार्टिकल्स हों या बॉटम पे सारा सॉल्टी टेस्ट आए। थ्रू आउट द सॉल्यूशन इसका कंपोजिशन होगा बिल्कुल एक जैसा, एंड दैट इज व्हाई सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज होमोजीनियस। होमो वर्ड का मीनिंग ही होता है सेम, एक जैसा। ओके, सो सच अ सॉल्यूशन इज सिंपली नोन एज अ सॉल्यूशन। तो व्हेन आई एम आस्किंग यू अबाउट सॉल्यूशन, जस्ट आंसर मी अबाउट अ होमोजेनियस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने शुगर को ऐड किया है वाटर में, तो शुगर इज अ सॉल्यूट क्योंकि उसका प्रपोर्शन कम है, और वाटर इज नोन एज अ सॉल्वेंट क्योंकि वाटर का प्रपोर्शन ज्यादा है। तो शुगर इज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमने टिंक्चर आयोडीन बनाया है, तो उसमें आयोडीन विच इज सॉलिड, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूट, और उसको अल्कोहल में ऐड किया है, इसलिए अल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्वेंट। तो हम किसी सॉलिड को लिक्विड में ऐड कर सकते हैं, किसी लिक्विड को लिक्विड में ऐड कर सकते हैं, या फिर गैसेस को भी एक दूसरे के साथ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंस ऑफ इन केस ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू लिक्विड। तो आपका कोका कोला, पेप्सी, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस सॉल्यूशन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज अ गैस दैट इज एडेड टू लिक्विड। उसके अलावा एयर इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस सॉल्यूशन क्योंकि एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और इनका एग्जैक्टली फिक्स्ड प्रपोर्शन नहीं है। मिक्सचर्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी इनका प्रपोर्शन एग्जैक्टली फिक्स नहीं होता। तो एयर में भी परसेंटेज थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है। ऑक्सीजन हम कहते हैं रफली इट्स 21%, नाइट्रोजन इज 78%, बट अगर ये एस्टिमेट करें तो इट्स एन एवरेज। सो दिस proportion is not exactly fixed in case of any of the mixtures. तो एयर भी एक होमोजीनियस मिक्सचर हो सकती है, बट उसमें डस्ट पार्टिकल्स ना हो, स्मोक ना हो, और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स ना हो, देन इट इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, पर हमारे आसपास की एयर में तो बहुत स्मोक है, एंड दिस एयर अराउंड अस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो वो कैसा एग्जाम्पल है, आई लेट यू नो। नेक्स्ट, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस आर देयर। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस, हेट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट। ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट एग्जैक्टली सेम ना हो, उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस। बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, इसके अंदर जो पार्टिकल्स मिक्स्ड हैं उनके साइज के बेसिस पे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं एज कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। कोलॉइड्स के फिर दो पार्ट होते हैं, फिर दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। जैसे सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कहा था, तो जिसका प्रपोर्शन कम था उसको हमने कहा था सॉल्यूट। सो इन केस ऑफ कोलॉइड्स, इन सॉल्यूट्स को ही हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, एंड जिसका प्रपोर्शन ज्यादा था उसको हमने कहा था सॉल्वेंट। एंड इन केस ऑफ कोलॉइड्स, such a thing in which such a medium in which dispersed phase is added, तो इस मीडियम को ही कहते हैं एक तरह से सॉल्वेंट, जैसे हमने कहा था सॉल्यूशन में, उसे ही हम कोलॉइडल मिक्सचर्स में कहते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम। ओके, अब हम इन तीनों टाइप के मिक्सचर्स को डिटेल में पढ़ते हैं, बट इन अ कंपैरेटिव वे। कंपैरेटिव वे ऑफ स्टडी हमारी स्टडीज को ना सिर्फ आसान बना देगी, बट इट विल मेक आवर लर्निंग enjoyable as well as easy to memorize also. Okay, so let's have a comparative study of these three types of mixtures. So let's compare the solution, colloids and suspension based on these parameters.
So first is the size of the particles. In case of solution, the size of the particles is very, very small. It's less than 1 nanometer. And what's 1 nanometer? 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meters. So the particles are even smaller than this. So the size of the particles is very, very small in case of a homogeneous solution. In case of colloids, the size of the particles is bigger. But how much big? Let's see. But let's first see the size of the particles in case of suspension. In case of suspension, the size of the particles is really, really big, and that's more than 100 nanometer. This particle size is really big, and so you are even able to see these particles like chalk or sand particles in water, because the size of the particles is more than 100 nanometer. But in case of colloidal solutions, the size of the particle is more than 1 nanometer but less than 100 nanometer. So it's between more than a solution size and less than the size of the particles in case of a suspension. It lies midway between the two. Okay, so you can just learn the size of the particles in case of solution and suspension, and the colloids will automatically fall between the two. Next, the type of mixture. We all know that solution is a homogeneous mixture, whereas a colloid as well as a suspension, both are heterogeneous mixtures. We have already seen that. Next is the visibility. Are the particles visible when we see a solution? No. If you mix salt or sugar or lemon juice in water, then the particles of salt or sugar are not visible to us. Means the size of the particles is too small and we cannot see them by naked eyes. In case of colloidal solutions also, the size of the particles is too small to be seen by naked eyes. We cannot see them by naked eyes, but if you want to see them, you can try it with an electron microscope. With the help of electron microscope, you must have heard that with a microscope, you can see the particles of milk. In the milk, you can see various bacteria, you can see lactic acid bacteria and that. So the particle size is big enough to be seen by a microscope, but small to be seen by naked eyes. Next, suspension. The particles are clearly visible by naked eyes also. Okay, just learn the examples and then these properties will be very easy for you all. Like example of suspension is sand in water or chalk powder in water. Based on that, you can learn the properties very, very easily. Next is Tyndall effect, that is scattering of light. But before studying that, let's look at an experiment to make our understanding easier. I have taken a colloidal solution with me. I have added few drops of milk to water to make it a colloidal solution, and you can see the scattering of light in all directions. So you can see that the light is getting scattered, it's getting spread in all directions, and this is known as Tyndall effect. Now I'll just show it for comparison with water. In this, I have added some sugar to water, and you can see that now the Tyndall effect is not visible. There is no scattering of light in a true solution. So, you have seen that Tyndall effect is the scattering of a beam of light when it passes through a solution. And the particles of solution do not scatter light because the particles of solution are too small. So, when we pass light through the solution, then the particles are too small to scatter the light. We have seen that. In case of milk, we have seen that it is a colloidal solution, and so the particles are big enough to scatter a beam of light passing through it. Sometimes when you get a plate in the morning and a beam of light is coming into your room, then you are able to see that beam of light and the dust particles are visible, that there are dust particles in the room. So that visible light is there, and the air around us is having smoke, dust particles, water vapors, and that makes the air around us is also a colloidal solution, because that is also an example of Tyndall effect. Even in the forest areas, you must have seen that whenever you see a scene of the forest in a movie or somewhere, then it's often shown that the beam of light is coming into the forest area, and that beam of light, that pathway of light is visible because that is also showing Tyndall effect. Okay, I hope you remember that. Next time, whenever you see that beam of light into your room in the morning, you will just think about that is Tyndall effect. Next is suspension. These suspension particles are also big enough to show the Tyndall effect. So they will also scatter the beam of light. They will also show Tyndall effect, but until and unless the suspension breaks. If you let them settle down, all the chalk particles are going to settle down, or all the dust particles are going to settle down. That condition is known as the suspension breaks.
And if the suspension breaks, means all the particles have settled down, then the Tyndall effect will no more would be visible. Now, next is stable mixture or the particles settle down. We have just discussed about that. In case of solution, the particles are too small and the particles are evenly spread throughout the solution and they are not going to settle down. So, the solution is stable and the particles are not going to settle down. In case of colloids, the particles do not settle down. In case of colloids also, it is the same as that of solution. So the particles are not going to settle down. The solution is a stable one. So colloidal mixture is also a stable mixture. Next, suspension. You all know that the particles are going to settle down when left undisturbed. And so it is not at all a stable mixture. Okay. Next is separation technique, how we can separate them out. So in case of solutions, you cannot separate out them by filtration. You cannot even separate them out by centrifugation. What is centrifugation? I'll let you know. So they couldn't be separated by filtration or by centrifugation. But in case of colloids, the particles could be separated by a technique known as centrifugation. Centrifugation is a very simple technique. Even your mother performs that at your home. Just ask her. So, in order to separate butter from buttermilk, मतलब छाछ में से मक्खन को अलग करने के लिए, your mother churns it in the mixer grinder. जब वो मिक्सर ग्राइंडर में उसको मिक्स करती हैं, तो क्या होता है? बटर separates out, it comes up at the top, and all the charge, all the buttermilk that remains at the bottom. So that process only is known as centrifugation. Centrifugation means high speed पे आप उस liquid को rotate करते हो so that उसके जो components हैं वो separate out हो जाएंगे. So that is true for all colloidal solutions. Even blood. Blood के जो components separate करने होते हैं, blood में से अगर plasma मतलब fluid part और cells जैसे कि RBC, WBC इनको separate करना है, तो भी डॉक्टर्स क्या करते हैं? एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है जिसमें ब्लड को रख दिया जाता है. सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन स्पिन करती है एट अ हाई स्पीड एंड सो व्हाट हैपेंस इज दैट जो ब्लड के सेल्स हैं दे बीइंग हेवियर दे सेटल डाउन एट द बॉटम और ऊपर फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड दैट इज प्लाज्मा वो सेपरेट आउट हो जाता है. तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक सिंपल चर्निंग है, रोटेटिंग इट एट अ हाई स्पीड, उसके कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे एंड दैट प्रोसेस इज adopted for colloidal mixtures. Colloidal mixtures के components को separate कर सकते हो आप by centrifugation. बट अगर solution की बात करो तो salt को dissolve करा है पानी में तो कितना भी घुमा लो उसको it is not going to separate out. Okay? उसको आपको separate करना है तो that you can do by evaporation. Salt अगर water में mix किया है, अगर आप उसको heat करोगे तो water evaporate हो जाएगा और आप उसको separate out कर सकते हो. But centrifugation या filtration से separate out नहीं कर सकते. Now, next is suspension. Suspension को separate करना तो बहुत आसान है, just filter paper से filter कर दो and the size of the particles is too big तो वो easily separate out हो जाएंगे. filter paper के ऊपर आपका sand या chalk powder रह जाएगा. Okay? Last is examples. Examples that you all know very well. सबसे पहले हमने start examples से किया था, तो sugar or salt or lemon juice mixed in water, they are all examples of solution. Pure air will also be called as a mixture of gases. So that is also a homogeneous solution. Okay. Apart from that, tincture iodine in which iodine is added to alcohol, that is also an example of solution. There was less space to be written here, so I'm just telling you that verbally. In case of colloids, milk, blood, these are the examples of colloids. We will be having a look at many more colloids in the later part of the chapter. Next is suspension. Sand or chalk powder dissolved in water is an example of suspension. Okay, so I'll just shift to side in case you want to take a screenshot of the same, you can take that. So I'll just shift to side. I hope you have taken a screenshot and that's all for this video, and we see you in the next video when we'll talk about the concentration of solutions. We will talk more about dispersed phase and dispersed medium about colloidal solutions as well. If you like the session, please do share it with your friends and help me to spread knowledge. Also, subscribe to my channel if you haven't already. That's all for today. Good day, everyone.